पहला बड़ा लॉन्च, साल की सबसे बड़ी पहली पिक्चर। एक बार जोरदार तालियां फॉर गेम चेंजर। एंड सही मायनों में जितने लोग यहां पे ये फ्रंट रो से लेके पीछे तक, जितने हमारे फोटो जर्नलिस्ट्स हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट्स हैं, एडिटर्स हैं, एमिनेंट जर्नलिस्ट, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म इंडस्ट्री व्हाट इट इज, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही ये सारे स्टार्स हैं, ये सारी फिल्में हैं, सारे सिने लवर्स हैं। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो आप लोग। Thank you so much for being here. Well, as we said, this is the trailer press meet of Game Changer, ladies and gentlemen. We have global star Ram Charan with us. One of the most loved producers of Indian cinema, Dil Raju sir, हमारे साथ है यहाँ पे. And another brilliant actor, director, lyricist, बहुत कुछ कर लेते हो. S.J. Surya साहब हमारे साथ हैं. Of course, we have Anil Thadani साहब with us, ladies and gentlemen. Of course, and Dr. Lakhani हमारे साथ, योगेश लखानी साहब. I'll be inviting all of them here, and we'll also show you some exceptional stuff on the big screen. Pooja, thank you for that big smile, of course. अच्छी बात है. Ladies and gentlemen, we've all seen the units. The film has got a lot of love. The units have got a lot of love. जो assets हमने दिखाए. In fact, Dallas में जो pre-release event हुआ था, ऐसा event आज तक किसी ने नहीं देखा है. तो अब, without any further ado, ladies and gentlemen, what we'll do is we'll make बहुत ज़्यादा noise and welcome on stage, ladies and gentlemen, the global star जिन्होंने यहां से लेके वहां तक, हिंदी heartland से लेके foreign तक हर किसी का दिल जीता है. Of course, the posters are up. हम लोग तैयार हैं for global star Ram Charan, ladies and gentlemen. Come on, make some noise. Wow, wow, wow. That's how we do it, ladies and gentlemen. Global star Ram Charan. एक बार वापस बोलो मेरे को. So, सबसे पहले, I would want you to tell us, how does it feel to be here? And why I'm asking you this question, because 4 साल पहले RRR was launched here, right here at this venue, and you are back. हम सब के साथ ये लेकर. This is Game Changer, and it's definitely going to change the game for the Indian cinema, sir. Namaste to all my media friends. Namaste. And Nitin, whenever I see you, I get jitters. My knees wobble. I feel the stress because we have to outlive the previous film's targets. So please don't do that with me. I don't do anything, sir. But yeah, it feels amazing. And thank you, Mumbai. Thank you, media, for having us and for coming here all the way and taking all this effort to be here. Thank you, sir. So we have a lot of questions for you. I'm sure बहुत सारे सवालों के जवाब सुनने के लिए everybody is very उत्सुक. हम लोग बहुत excited भी हैं. लेकिन उससे पहले, so we have these units that we'll be playing on the big screen with your kind permission. Of course. Shall we do it? Please, sir. Please, sir. Please. Also, before we go any further, ladies and gentlemen, I'd like to share this with you that Kiara, of course, she was supposed to be here with us, but unfortunately, as she's been hospitalized, she's not here with us, and she sent her good wishes to the entire team of Game Changer. What we'll do is, abhi ke liye, I would request all of you to kindly switch off your cameras. क्यों बता देता हूं, क्योंकि कुछ यूनिट्स हैं दैट वी ऑलरेडी सीन. हमने बड़े सारे यूनिट्स और जो एसेट्स हैं गेम चेंजर के वो देख लिए हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स global star Ram Charan wanted to share something exclusive with this bunch जो सिर्फ फिल्म में आपको देखने को मिलेगा. तो वो यहाँ पे टीजर, ट्रेलर और एक गाने के साथ वो आप सब के लिए एक्सक्लूसिवली लेके आए हैं ग्लोबल स्टार राम चरण. सो एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने कैमरास बंद कर लीजिएगा बिकॉज बैक टू बैक सब कुछ यहाँ इस बड़े पर्दे पे चलेगा. ऑल सेट डॉक्टर साहब, आई एम लुकिंग एट यू. कैमरास नीचे कर ले हम लोग थोड़ा. हाँ, वील गिव यू टाइम, उसको वापस सेट कर लेंगे, है ना.
नहीं वो तो ऑफ कोर्स सर के साथ यहाँ पे सो जोरदार तालियां फॉर टीम गेम चेंजर लेडीज एंड जेंटलमैन। और वो डायलॉग था ना 5 साल वाला, मैं इतना ही कहूंगा 1 साल 5 साल 10 साल भाई ये हमेशा हमेशा के लिए ग्लोबल स्टार है। रामचरण के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑफ कोर्स one by one I'd be inviting all these lovely people on stage। भारती मैम क्या बोलना चाहती हैं? कुछ तो है ना, लग रहा था, मैं देख रहा था शी वाज आल्सो देयर। नीतू मैम कोने में बैठ के एकदम शी इज लाइक हाँ मैं एकदम मैं कैरेक्टर में हूं, खुद मैं कैरेक्टर में चली गई थी। यहाँ पे फूल नहीं तोड़ने किसी और ने, वो सिर्फ ग्लोबल स्टार कर सकते हैं। आई नो सब लोग फूल उठा के कोशिश करेंगे कि वो कुछ का कुछ बन जाए। सॉरी because you wearing somewhat like purple today is I know that Bharti ma'am of course। So what we'll do is we'll again same color, indigo, purple, okay, so okay, no, come on, coming back to the mudda right now, we'll be inviting all these lovely people on stage। We'll start with one of the most celebrated superstars of Indian cinema, ladies and gentlemen, a versatile actor whose remarkable performances have captured hearts not just in India balki globally। Global star Ramcharan ke liye ek baar zordar taaliyan। Give it up for him, ladies and gentlemen। Welcome sir, thank you so much for being here and thank you so much for doing this। बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले I'd like to invite on stage this brilliant actor, director, producer, music composer, lyricist। सर कुछ बच्चा है तो वो भी कर ही लीजिए ना। S.J. सूर्या साहब के लिए जोरदार तालियां। We saw his brilliance on that big screen, ladies and gentlemen। Thank you so much sir for being here। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। Thank you so much। And now, as I said, one of the most loved producers, ladies and gentlemen, a stalwart of Indian cinema। He's a visionary producer whose contributions have shaped the landscape of modern cinema and not just in India, of course, globally इनको बहुत प्यार मिलता है। दिल राजू साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Of course, the man with the vision and of course with all his might he backs all his projects। Sir, thank you so much for being here। and I know जब sir बोलते हैं ना सब चुप हो जाते हैं, लेकिन first things first, global star Ramcharan साहब, I'll start with you। You know, we are so happy to see you here। 4 साल हो गए sir, why so much time sir? 4 साल का gap कौन लेता है sir? Why would you do that? Hi Nitin, but Nitin, Yes, why didn't you ask Shankar sir? I was namaste everybody। Namaste। I love you guys। For the first time, I'm feeling very alone right now। Can we also invite Anil Tadani ji? of course sir, of course। Yeah। AA Film se we have Mr. Anil Thadani, ladies and gentlemen, give it up for him please। Yeah। How come you forgot him? No, सर मुझे डांट पड़ती है वहां से पहले बुलाने पे। Okay, all yours sir। So, first time I'm feeling very alone, but also I'm feeling so much welcome। Thanks to all of them here। Thank you ma'am, thank you all of you, thank you sirs, thank you। So मालूम नहीं यार, मेरे को भी जल्दी जल्दी करना है मूवीज, मालूम नहीं इतना देर क्यों होता है। राइट, इसलिए होता है क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आता है ना सर, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सब लोग डूब जाते हैं उसमें। नितिन आप हैदराबाद आ जाओ या मेरे साथ रह जाओ। इतना अच्छा बात करते हो, मेरा बीवी भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। लव यू नितिन, थैंक यू डार्लिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा न्यू ईयर तो मन गया, बाकी देख लो। दिल राजू सर, दिस वंस फॉर यू। यू नो, for the first time in Indian cinema, we saw something like a pre-release event, and that too so massive in Dallas। US चले गए सर आप पूरी की पूरी टीम को लेके। What do you have to say, sir? या सबको नमस्कार। गेम चेंजर के साथ आई वांट समथिंग न्यू। उसमें सोचे क्या कर सकते हैं, सब लोग इंडिया में सब जगह कर रहे हैं ना, चलो सीधा अमेरिका में करेंगे बोल के डैलस में प्लान किया। And the response that you've gotten, sir, over there is like mind-blowing, overwhelming था वो। Talk to us about that। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट डैलस में हुआ, जो ऑलमोस्ट मोर देन 12,000 क्राउड, वो ऑडिटोरियम बाहर भी भीड़ था। सो उतने रेस्पॉन्स मिला और ऑलमोस्ट 4 आवर्स इवेंट, सब लोग एंजॉय करते। फाइनली इवेंट जबरदस्त बना। सर सब कुछ जबरदस्ती होता है जब आप कर देते हैं, कमाल हो जाता है। दिल राजू साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज।
Now talking to S.J. Surya साहब, thank you so much and आमची मुंबई में आपका स्वागत है sir, बहुत बहुत स्वागत है. First things first sir, 180 million plus views across all platforms in 24 hours इसको मिले हैं. What do you have to say on that and the kind of love that your part is getting sir, that is also sir amazing sir. Thank you so much. Thank you, press and media, everybody. Wish you a very, very happy New Year. This year, God will bless a lot of success to this all industry, even Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannadam, Bhojpuri, Bengali. Every movie should be a hit. वो सक्सेस गेम चेंजर में शुरू हो रहा है, यही मैं सोच रहा हूँ. मेरा हिंदी थोड़ा गलत है, बट गेम चेंजर में मैंने वॉइस दिया. Okay, but you see that my dubbing, definitely you will love it because when this movie, when I got this offer from Shankar sir and Dilraj sir and especially Ram Charan Garu, because I'm acting with him, really it's a great honor. Really, I'm telling you, he's a bada star. He's a bada star in South, in bada star in North also. Globally, he has reached everywhere, and he is so kind. He is so very genuine actor, and he has done a fantastic performance in this film. People say we believe in one thing: we should not talk much about the film, but movie should talk. Definitely, this movie will talk. Okay, because I am not telling about Ram Charan Garu about him. But I'm telling about his performance, what he done as Ramnandan, and especially one big, great character, Appanna. It comes in flashback. It will steal all your heart. Definitely, he has done a fantastic. When I'm saying, I'm getting goosebumps really because I seen some. No, I really mean it. And as an audience, with you only, I'm seeing this song, Jarigandi song. Wow, sir, really, producer Garu, director Garu, and sir, you carried the song so well, sir. Fantastic. You and Kiara did a fantastic. This Prabhudeva Master choreographed, and while dubbing also, while seeing the movie also, but I didn't see this. But I didn't see the whole film. But only my part I was dubbing. But when I'm seeing this song with you all, I got very high. I got high. I really loved it. People will love it for sure. And in North, Shankaranti is a big festival. No? Yeah, substates it's a big set. No? So Jan 10th, this movie aa raha hai. So big production value, fantastic concept. The movie is about a war between a Galti politician and a true collector. Okay, so and why this true collector has a backstory, that is Appanna. Okay, so what the great magic, this writing and the performance and the scene has come out very nicely. It will all entertain you. It will all make you feel fine. It will heal you all for sure for some moment. When we see Ashiki 2, you know who made it as a big hit? Who all are going to pub? Who all are pataving other girls? They made it as a big hit, right? But you know why? Because such a genuine soulful thought. Okay, that's such a soulful thought. When it is, everybody wants to be like that. But only they can carry that emotion for 2.5 hours, not more than that. Right. That's why it's a super hit. Right. Like that. So in society, we have to have a nice thing. What kind of political system should be there? Yeah. Yeah, today evening, Rajamandri में बहुत बड़ा event है. Okay. Yeah. What Pawan Garu doing on field, he is doing as a collector in the movie. Wow. No, yeah. So what I'm trying to say is, yeah, such a genuine thought has been presented by director Shankar Garu, and he has done a fantastic job. Taman Garu did a fantastic music. Everybody performed well. I also did a good job. Okay.
Hope you'll all enjoy that. Okay. Definitely after success, we all come and meet you. We'll share the success and make it a big success. You all please do watch and enjoy the Game Changer. It is going to be a real game changer. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सर. सर हमने झूठ बोला. यू लाइड सर. What, sir? आपने बोला सर मेरे को गलत हिंदी, इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं, तालियां बटोर रहे हैं सर. यू ऑलरेडी किलिंग इट. गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन. आई एम श्योर फिल्म देख के बड़ा मजा आ रहा है. मूवी देखने के बाद बोलिए. अरे सर हमने अभी बोल दिया. I take my word, you will all love my dubbing, you will all love my voice, you will all love my performance for sure. We are loving it already, sir. Thank you so much. वापस से ग्लोबल स्टार से एक सवाल है मेरा यहाँ पे. Please talk to us about this extraordinary filmmaker Shankar sir, because यहाँ पे people are saying Shankar sir and रामचरण दोनों साथ में आ रहे हैं. बहुत बवाल होने वाला है. What do you have to say on that? See, you know, Shankar sir made a remake of Three Idiots in South. It's called Nanban. So when they released in Telugu, I was the chief guest for that. I was sitting right. It's a small story. I just want to share. I was sitting next to Shankar sir. एंड मैंने ये सोच रहा था कि अरे कैसे बोलूँ शंकर सर, एक मेरे साथ नहीं किसी के साथ भी इट्स ओके बट जस्ट मेक अ तेलुगु फिल्म यार. सिर्फ तमिल फिल्म बनाते हो एंड मेरे डैड के साथ बनाओ या एनी ऑफ माय कंटेम्प्रेरी हीरोज. बट वो बोलने के लिए यू नो आई डिडंट हैव द गट्स आल्सो. एंड आफ्टर कपल ऑफ इयर्स देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम मिस्टर राजगारू saying, Shankar sir, I was doing last 2 schedules of RRR. I was working. Then Raju sir comes to Ramoji Film City where I was working. He says, Ram, Sir Shankar wants to work. I said, huh? Achha, yeah, baad mein bolenge. He said, hello. क्या बाद में बोलेंगे? ये शंकर सर है. He said, आपके पास क्या है? शंकर सर आएगा. Then I got to know it is really Shankar sir. And I was like, shit, Raju sir, call right now. So it is such a dream come true for me. You know, we all have been watching his movies growing up. You know, recently Mr. Rajmani sir also said he's the epitome of commercial films, the larger than life. He has defined what is the global film and global cinema and the pan-India cinema. He was the first pan-India director we had. Hats off to him, and I'm so blessed. And yeah, I don't know how my dad will feel, but yeah, I'm very blessed. He should have done it with dad. So I'm very fortunate, and it's a blessing to work in just 5 years to work with a director like Mr. Rajmani Garu, and then Shankar. As an actor, it is so enriching, and it's so much to learn from both of them. There's there's no comparison, of course, but both of them are like masters of their craft. But S.S. Rajamouli sir and S. Shankar sir. Sir, how do you see this thing ki, you were directed by Rajamouli sir and now Shankar sir? Kya difference hai? Oh, thank God, difference. You didn't compare them. Not at all, sir. Not at all. So both of them are taskmasters. Both of them expect a lot from each and every person. And especially having such beautiful actors. He is one of the craziest person and the craziest actors I've met. He is. And he just said he saw the song and he saw Kiara and me. मैंने तो producer का ये देखा था उसमें. So I think both Mr. Rajmani sir and me, Mr. Shankar sir, both are taskmasters. They give you every opportunity. Perform करने के लिए and to be your best. Yeah. It is very rare to work with such talent, and they keep pushing you always. And there's not one day where थोड़ा relax होने के लिए time मिलता है. नहीं. Every day, even if it's a single shot. I remember one day I was sitting with Shankar sir saying, "Hi Ram, coffee पे yes sir." अभी first day था. Then he was having a coffee, I was having a coffee, and suddenly he started looking, not at me, at my hair. And he called assistant director, he said, "Idhar aao, wo iPad leke aao." And he's looking at the iPad and this thing. I said, then मेरे को मालूम पड़ गया, he's not talking to me, वो character के साथ बात कर रहा है, Ram Nanda. I said, "Idhar aao." Then he started touching me. It is very intimidating when somebody touches you like this. I said, I can't say. He said, कुछ बदला क्या? क्योंकि iPad में जो आपको पिक्चर ने भेजा था वो कैरावान में exactly नहीं था. I said, I swear to God, it is only 5
1% difference from what he sent. But he's so particular and he's so master at his craft. Even that 5%, it doesn't matter. And even if you're Mr. Rajnikant ji or Kamal Haasan ji, he worked with, or myself, doesn't matter. He's so particular. So that's what I enjoyed working with him. And yeah, that's something. Yeah. Right. Dilraju sir, this one's for you. Please tell us, he just talked about the moolah. Of course, you know, people are talking about, we usually talk about movie ka budget, but here people are talking about gano ka budget. They're like, yaar, gano mein itna tagda budget, and whatever we saw on that big screen is spectacular. Talk to us about it, sir. यह पूरा पिक्चर में 5 सॉन्ग्स है, 5 सॉन्ग्स का बजट 75 करोड़. एक एक गाना 10 दिन 12 दिन ऐसा, रिहर्सल्स भी अलग है. एक एक शंकर सर ने एक एक गाना को प्रॉपरली डिजाइन करता है. अभी जो देखा है इज अ बिग सेट, हैदराबाद में डाल के 10 डेज इसका शूट किए. एक गाना के नाना हैराना करके एक गाना है ना, वो मेलोडी सॉन्ग, वो न्यूजीलैंड में 10 डेज शूट किए. इसे कुछ नया एक्सपेरिमेंटल किया शंकर सर ने वो गाने के ऊपर. ऐसा वो राम अच्छा सॉन्ग वाइजाग और अमृतसर में, ऐसा एक एक गाना 12 दिन 10 दिन ऐसा. 75 करोड़ बजट फॉर 5 सॉन्ग्स. सर आपको 12 दिन बोला है, मेरे को 18 दिन काम किया था. नहीं रिहर्सल्स का अलग है बोल के बोला ना. आपका एक्स्ट्रा है वो. अलग हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे, ये बढ़िया है. दिलराजू सर, यू नो पीपल टॉक अबाउट 75 करोड़ और दिल बैठ जाता है, लेकिन यहाँ एक के बाद एक आप ऐसा यू नो गाना बना के, प्रोजेक्ट बना के दिल जीत रहे. चैलेंजेस की बात बताइए फॉर अ प्रोड्यूसर. यू नो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इसको बनाने में? वर देयर एनी चैलेंजेस? नहीं, ये मेरा 50th फिल्म है हमारा बैनर में. सो आई वांट समथिंग स्पेशल बोल के मेरा मन में था. और जैसा अभी रामचरण ने बताया ना, उसको शंकर सर का फ़ोन आया जब, उसका जो एक्साइटमेंट है सेम मेरा भी था. मैं काउंट किए, अरे क्या कौन सा नंबर पे आता है फिल्म स्टार्ट करने को. 49 था पहले. नहीं एक फिल्म पहले स्टार्ट करके इसको 50 करो. वो स्पेशल फिल्म बनता है लाइफ में 50 फिल्म बनाने के बाद. सो ये स्क्रिप्ट जब से मैं सुना है ना, ये फिल्म को प्रॉपर बनाना. जब रामचरण का वो RRR चल रहे थे, चलो RRR तो पैन इंडिया फिल्म है, ग्लोबल भी लेके गए नाटू नाटू सॉन्ग के साथ राजमौली सर ने. सो जब भी सोचा है ये फिल्म को ज़बरदस्त बनाना. जनरली शंकर सर ज़बरदस्त बनाते, शंकर सर को सपोर्ट करना एवरीवेयर, उसके लिए 3.5 साल लगा है. एब्सोल्युटली सर, वो मेहनत दिख रही है इस बड़े पर्दे पे. कमिंग टू आवर फेवरेट Mr. Thadani, hi sir, welcome. So good to see you. So what do you have to say about this collaboration here with Dilraju Production, Z Studios? Of course, you are distributing the film यहाँ पे. हर किसी को मैंने कहा ना, ये फिल्म्स लग जाता है, so बहुत राहत मिलती है कि कुछ तो कमाल होने वाला है. 10th January संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं गेम चेंजर के संग. What do you have to say, sir? Hello everyone. I'm really thankful for Dilraju sir for letting me a part of this very special 50th film of his. He's been the backbone of this film, such a massive film. Shankar sir I've dealt with before. He's always made larger than life films. Hopefully this turns out to be as successful as his previous films that I've been connected with. Surya, he's got a massive fan following, and I've seen his skills, and he's just amazing. As for Charan, I think being such a massive star, I think he's a much better human being, a much bigger person, and it's always wonderful dealing with him. I've dealt with him earlier, and it's always been a pleasure. I just hope that this film turns out to be a very glorious one for our best ever producer. Thank you so much, sir. Thank you. Anil Thadani साहब, ladies and gentlemen. Of course. वो बोल रहे थे ना बीच में, क्या चल रहा था वो, एक है ना अपना जय क्या था? ये बढ़िया वाले लेके आए हो यार, तुम हमसे भी अच्छे लेके आए हो यहाँ पे. लवली. बस चाबी भर दी मैंने, ऐसा लग रहा है. Okay, I'll come back to our global star quickly. You know, if you have to talk about the response that you got in Dallas, because आप वहां गए थे. Let me tell you, the entire Indian industry, हर किसी की नजरें थी वहां पे किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, कितना प्यार मिलेगा. And we saw the event. It was mind blowing. Talk to us about that, sir.
think like Dil Raju sir said already, I think global platform is very important for all of us, like for Indian film. And especially in Dallas, I think it's such an overwhelming response. मैं सोचा भी नहीं था, and it truly tells us how the global audience are the true cinema lovers, and most of our revenue is coming from there, and they truly love cinema for cinema it is, and it's just not for because I'm there or Shankar sir there. They love a good film, and to have that response, I'm very blessed, and just like us and our audience as well. Right. One last question. Dil Raju sir, this one's for you. You know, quickly we'll talk about the cast here. You have superstar Kiara Advani. You have global star Ram Charan. Shankar sir, the visionary filmmaker. How easy or difficult was it to get all of them together, sir? या हो गया? नहीं, पहले तो सेट इजी कर दिए और उसके बाद प्रोसेस लॉन्ग हुआ ना, सबका इमोशन पकड़ के सब लोग सपोर्ट करे. सो एवरीवेयर जब भी शेड्यूल के लिए डेट्स होना, सब लोग सपोर्ट करके फिल्म को कंप्लीट करने में मेरे को और शंकर सर को सपोर्ट किया. सबके लिए एक बड़ा नमस्कार. सर सब लोग बहुत फिल्म्स की है सर. 3 साल में मैं एक ही फिल्म किया, गेम चेंजर. कैसे बोलते? He said it. है ना? सर बट शिकायत वो किया. सपोर्ट करना भी इज इम्पोर्टेंट ना. रामचरण को भी दूसरा फिल्म आए थे, नहीं ये कंप्लीट हो गए तो वो स्टार्ट ही नहीं किया. ये कंप्लीट होने के बाद अभी स्टार्ट किया. All I want to say is कि अब ऑडियंसेस की बारी है. उन लोगों ने अपना डेडिकेशन प्यार दिखा दिया है. अब 10 जनवरी को we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. And before we wrap this up, ladies and gentlemen, सर एक रिक्वेस्ट है. मुझे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने, हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट ने, फैंस ने बोला था वो they want to do that unpredictable thing with you, sir. Can we all do it together? है ना? I'll take the mic. What? The unpredictable thing. I'll take it. Okay. 3, 2, 1. Dave said it. Thank you so much, sir, for being here. Thank you so much. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां. So we'll have a quick Thank picture. you. Please do watch Sir, Game Changer. We'll have a quick picture. We have with us this legendary इंसान, of course. इनका भी नाम legends में लिया जाता है. Bright Outdoor से डॉक्टर योगेश लखानी हमारे साथ. कोई इवेंट पूरा नहीं होता जब तक इनके साथ यहाँ पे वार्तालाप ना हो, मुलाकात ना हो. Please sir, give it up for him. क्या बात है सर, अलग अलग फैन फॉलोइंग चल रही है. Can we yeah, it's time for a quick photo up with the team. Thank you so much.